लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक चुनाव से जुड़े समाचार और साथ ही साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ इन सभी खबरों पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से और जानेंगे चुनाव परिदृश्य के बारे में भी। आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल केतकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। The Election Commission holds meetings with law enforcement agencies, reviews law and order situation for the Lok Sabha and 4 state assembly elections. Congress leader Rahul Gandhi files nomination from Wayanad today. 113 leaders, including Rajasthan Congress veterans, boxer Vijender Singh join BJP. निर्वाचन आयोग ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वायनाड से नामांकन दाखिल किया और राजस्थान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित 113 नेता हुए भाजपा में शामिल। मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने थामा भाजपा का हाथ। सबसे पहली खबर, निर्वाचन आयोग ने आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। निर्वाचन आयोग कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर रहा है। बैठक में अवैध गतिविधियों और जब्ती को रोकने तथा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी से संबंधित कदमों की भी समीक्षा की जाएगी। आयोग ने कल लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। ये नियुक्ति समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और सतर्क निगरानी के लिए की गई है। विशेष पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नियुक्त किए गए हैं। A total of 113 leaders, including many veterans of the Congress in Rajasthan, joined the Bharatiya Janata Party today. These include former MPs, MLAs and leaders who rebelled against the BJP and contested the elections. Former Congress MP from Hanumangarh, Shankar Pannu, former Congress MLA from Pilani, JP Chandelia, former State Vice President of JJP and former MLA Nandakishore Maharia joined the BJP in the presence of Rajasthan co-in-charge of BJP, Vijay Rahatkar, at the state BJP headquarters in Jaipur. लोकसभा चुनाव से पहले मुक्केबाज विजेंदर सिंह आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर विजेंदर सिंह ने कहा कि वे देशहित और लोगों की सेवा के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जलगांव से सांसद उन्मेष पाटिल आज शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो गए। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर उन्मेष पाटिल शिवसेना में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्मेष पाटिल के स्थान पर स्मिता वाघा को जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। Congress leader Rahul Gandhi filed his nomination in Wayanad constituency in Kerala today. Rahul Gandhi, who is the sitting MP and UDF candidate, conducted a roadshow in Wayanad before filing the papers. Mr. Gandhi was accompanied by his sister Priyanka Gandhi and state Congress leaders. Meanwhile, the LDF, the Left Democratic Front candidate in Wayanad, Annie Raja, also submitted her papers today. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद तत्काल भरे जाएंगे। उन्होंने ये भी वायदा किया कि यदि उनकी पार्टी ने चुनाव जीता तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। Have you ever taken a moment to ponder why voting is emphasized so much? It seems like everywhere you go nowadays there is a reminder to make you cast your vote. Well, there's a strong reason behind all those appeals.
Every single vote holds immense significance as it has the potential to alter the outcome of an election and shape the future of both the individual and the society. It's no exaggeration to say that your vote truly matters. Our correspondent Durgesh Bhadodia has more to share. There have been instances where the fate of an entire election has hung in the balance of just one single vote. In the 2004 Karnataka Assembly elections, Janata Dal secular candidate A.R. Krishnamurthy from then Santimarala Assembly constituency lost by the slimmest of margins, just by one vote to his Congress's opponent R. Dhruv Narayan. Similarly, in the 2008 Assembly polls in Rajasthan, the electoral contest was decided by a single vote when Congress's then state president C.P. Joshi lost to BJP's Kalyan Singh Chauhan from Nathdwara constituency. These instances serve as compelling reminders of the key role that each and every vote plays in shaping the democratic process. So the next time you are tempted to skip voting, thinking your vote won't make a difference, remember these stories. Your vote isn't just a formality, it's your voice, your power, and your chance to make a real impact on your and your country's future. So don't underestimate the power of your vote. That was our correspondent Durgesh Bhadodia, and we also appeal to all voters to exercise your franchise on the day of polling. So we have in the studios today senior political analyst Mr. Prafulla Ketkar. So Ketkarji, you have seen today also the filing of nomination by bigwigs, and the Wayanad Lok Sabha Assembly especially. It is drawing a lot of attention. Your take on that? It is a very interesting situation, Kaushikji, simply because when the opposition alliance, the India alliance, has been talking about the unity and combinedly fighting against the BJP-led NDA, here is one constituency where earlier Kerala Chief Minister Mr. Pinarayi Vijayan questioned Mr. Rahul Gandhi's candidature, and when today Mr. Rahul Gandhi actually filed the nomination, CPI General Secretary D. Raja actually said, if you are so serious about fighting against BJP, why you are coming all the way to the left bash in Kerala and constituency of Wayanad? So Kerala and Bengal, two are very peculiar cases where the opposition unity is in complete disarray. And, in Bengal, there are many constituencies. One of the constituencies that we are going to discuss perhaps today is Kuch Bihar. There again, Forward Bloc and Congress and Trinamool Congress all are fighting against BJP. So where is the opposition unity? Now, when such voices come out, then the entire scene that we have experienced on Ramlila Maidan last week, that really put a question mark on. So Wayanad is going to be the testing point for the opposition call for unity, and Kerala, because the major fight has been between UDF and LDF for last 25-30 years now. How far BJP takes the benefit of it and at least improves its vote share, that is the matter that many analysts would like to watch. जी केतकर जी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वायनाड से उन्होंने आज पर्चा भरा है। गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो जो उनका जो प्रमुख आधार रहा है वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी इस बारे में कोई जानकारी आ नहीं पा रही कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अपनी जो परंपरागत जो उनकी सीट जो एक जनाधार रहा है उनका वहाँ पर, वहाँ से पर्चा भरेंगे या चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। क्या कांग्रेस ने बिल्कुल उम्मीद खो दी है उत्तर प्रदेश से? देखिए विशाल जी, यदि ऐसा होता है कि अमेठी और रायबरेली इन दोनों में से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांधी परिवार से कांग्रेस की तरफ से कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है, तो 1952 से लेकर आज तक के चुनाव में ये पहला ऐसा चुनाव होगा, क्योंकि पहले फूलपुर रही, फिर सुल्तानपुर रही, अमेठी रही, रायबरेली रही, ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज कांग्रेस का गढ़ भी मानी जाती थी और नेहरू गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी। तो ये शायद पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पे
कांग्रेस एक तरीके से वीक पोजीशन में अपने आप को ओपनली एक्सेप्ट कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को वहां पे 2-2.5% का वोट है, तो इसलिए लेकिन ये एक तरह से स्वीकार कर लेना कि आज हम अमेठी और रायबरेली भी छोड़ रहे हैं, तो एक तरीके से मुझे लगता है कि यह हार स्वीकार करने की बराबर है। पिछली बार जब राहुल गांधी वायनाड से लड़े थे तभी बहुत लोगों ने ये कहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर जाते हैं, वहां से ये होना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। धर्मनगरी हरिद्वार से हमारे संवाददाता ने वहां का लेखा जोखा भेजा है, आइए सुनते हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से इस बार 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के वीरेंद्र रावत और बसपा के जमील अहमद सहित 14 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इस सीट पर 7 उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार भी शामिल हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 7 नामांकन अपूर्ण पाए गए थे और इन्हें रद्द कर दिया गया। इस लोकसभा सीट से कुल 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस वर्ष 20,35,726 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। सुगम मतदान के लिए इस संसदीय क्षेत्र में 2,318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अम्बरीश कुमार को 2,58,729 मतों से पराजित किया था। जी केतकर जी, अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले 10 लोकसभा चुनावों का अगर हम बात करें तो भाजपा ने 6 बार यहां पर जीत हासिल की है, कांग्रेस को 4 बार विजय हासिल हुई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया है भाजपा ने हरिद्वार सीट से, और हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत इस बार इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे आप मानते हैं? धार्मिक पर्यटन का एक दबाव बहुत बड़ा रहा है हरिद्वार को और लाखों श्रद्धालु जिस हिसाब से वहां पहुंचते हैं, और एक विकास मॉडल की दरकार भी वहां पर बार बार इस बात की भी आवश्यकता उठती रहती है। इसके अलावा आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, चुनाव नतीजों को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं ये? जी, हरिद्वार एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तराखंड में रही है पिछले 2 चुनाव में, खास करके जहां पे भाजपा ने पिछली दोनों बार 2014 और 2019 के चुनाव में केवल ना सीट जीती थी, सारे कॉम्बिनेशंस कैसे भी रहने के बाद भी 50% से ज्यादा वोट लेकर रमेश पोखरियाल वहां से जीते थे। तो इसलिए वहां पे इस बार बीएसपी का तो कैंडिडेट है ही, कांग्रेस के हरीश रावत जी का पुत्र वहां से लड़ रहा है। रिलीजियस टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट, ये कोर इश्यूज हरिद्वार के मैं मानता हूं। उसके साथ साथ हरिद्वार की डेमोग्राफी पिछले 10-15 वर्षों में बहुत बदली है और उसके कारण वहां पे एक रिलीजियस पोलराइजेशन का भी अलग माहौल है। ऐसे में यूसीसी निश्चित वहां पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव तक नहीं था, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर वहाँ की विधानसभा ने इस पर उस निर्णय किया एक समान नागरिक संहिता लागू करने का। तो ऐसे में हरिद्वार एक टेस्टिंग पॉइंट बीजेपी के कंसोलिडेशन के लिए हो सकता है। उत्तराखंड की दिशा और उत्तराखंड की ये नई नीति सही में लोगों को कितनी स्वीकार है, ये मुझे लगता है इसका टेस्टिंग ग्राउंड हरिद्वार बनेगा। Right. And now we go to the next constituency profile, Kuch Bihar in West Bengal. Our correspondent Kalyan Laha has filed this report. Kuch Bihar in West Bengal will go to polls on 19th April. 11 candidates, including independents, will try their luck on that day. There are more than 19 lakh voters in Kuch Bihar. The number of female voters are more than 9 lakhs. Political heavyweights like Trinamool Congress, BJP, to lesser known Kamtapur People's Party United, all parties are busy in public meetings. Nishit Pramanik, BJP's candidate and sitting MP, will fight to retain the seat, whereas Trinamool Congress Jagdish Chandra Barma Basunia will give a tough fight. Though there is an alliance between Congress and left, both parties have fielded their candidates. All India Forward Bloc's Nitish Chandra Roy will face the poll under Left Front banner. Congress has fielded P.R. Roy Choudhury. BJP's senior leader and Prime Minister Narendra Modi will campaign in Kuch Bihar on 4th April at Raslila Maidan.
Trinamool Congress Supremo Mamata Banerjee will address a public meeting at Mathabhanga on the same day. As a whole, West Bengal and particularly people of Cooch Behar will witness a political heatwave on 4th April. That was our correspondent from Cooch Behar. And what is your take on this fact, which you mentioned that it's turning out interestingly, Forward Bloc versus Congress versus TMC versus BJP, and of course there would be other candidates also. See, Kaushikji, we need to understand Cooch Behar is a very interesting constituency, very sensitive constituency, adjacent to Bangladesh. At one point, it was considered to be a bastion of Forward Bloc. Forward Bloc, where existed from 1960s, mid-1960s, 1967 onwards, is one constituency I have to mark on the map. It is Cooch Behar constituency. And suddenly, post-2014, the situation changed. Trinamool Congress made the surge. But if you see the 2019, then it was a remarkable, because Trinamool Congress surge was hardly of 10% margin in 2014, and it could win the seat. But in 2019, BJP made a miraculous rise in this constituency with 31% positive vote share. Now, if we see this scenario, Nishit Pramanik, if I'm not wrong, 44% of vote share in 2019, and Trinamool Congress getting around 37%, while interestingly, that time Forward Bloc had secured around 8 to 9%. Now again, not just Forward Bloc, but even Congress is fielding its own candidate. So the earlier formulation that was thought about, that TMC Congress left, right, then TMC actually vetoed and say no left. But now it seems that even Congress TMC, there is no understanding when it comes to, especially after the leader of opposition in Lok Sabha took a very firm stand against Mamata Banerjee. So, as I said, Bengal is going to be again a testing ground for the entire agenda of opposition unity. Right. जी, और अब गया सीट का लेखा जोखा दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार रॉय। गया लोकसभा सुरक्षित सीट पर चुनाव में 18 लाख से अधिक मतदाता इस बार 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 8,66,000 से अधिक है। एनडीए में सीटों के समझौते के चलते इस बार जदयू की यह सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में चली गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के विजय मांझी ने यहां से जीत हासिल की थी। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में असफल रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तीसरी बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत बोध गया निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक भी हैं। वे पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से सुषमा कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। नक्सल प्रभावित होने के कारण गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शेरघाटी, बाराचट्टी और बोध गया में सुबह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक ही मतदान का समय निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल होने के बावजूद क्षेत्रीय असमानता, गरीबी, शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या, बेरोजगारी और पिछड़ापन इस बार चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। Prafullaji, our correspondent, highlighted the major issues before Gaya, which also is a huge attraction for foreign pilgrims being part of the Buddhist circuit. And the present government has focused on development. We have seen how the Buddhist circuit has evolved. And now Gaya is an interesting seat because the same contestants are going to fight each other once again through different combinations, if I'm not wrong. No, Vijay Maji has not shifted the side. RJD has given the seat. Now, last time, Jitan Maji had lost the seat because he was in alliance with his Hindustan Awam Morcha was in alliance with RJD. So he had lost that seat. Now he is a candidate of NDA. Now, Gaya is very important. As you rightly mentioned, it is part of Buddhist circuit. Internationally, there are many countries who have their pilgrim centers there.
if somebody visits Gaya, then you realize the kind of presence from Thais to Burmese to Sri Lankan pilgrims have on that city. But compared to that, the infrastructure has got little bit of Philip, only in last 5-6 years. But still, Gaya airport has come up well, so that is another addition to Gaya's infrastructural facility. But still, when it comes to the connectivity with other parts of the state, still it is a problem, because at one point Mr. Nitish Kumar actually became a road and connectivity kind of chief minister who developed a lot of infrastructure. But still, Gaya, especially because in the circuit, the next important point comes is Nalanda, and if you have to reach from Gaya to Nalanda, the road infrastructure is still very problematic. Right. And now we go over to our correspondent in Kolkata, Kalyan Laha. Kalyan, what are the political developments in West Bengal with regard to the general elections? Hello, Kaushik. If we look at political developments in West Bengal in light of general election 24, the main fight is between BJP and Trinamool Congress. There is no such political activities in respect to INDI alliance. Trinamool Congress has kept itself aside from the alliance. A loose political relation has developed between left and Congress. If we look at BJP, a voice of dissent has developed inside it. When its Karsiang MLA Vishnu Prasad Sharma has ignored the party line and submitted nomination as independent candidate from Darjeeling seat. BJP has fielded Raju Bista from here. Allegations and counter-allegations by political parties regarding model code of conduct are there. Recently, Election Commission has censured BJP MP and senior leader Dilip Ghosh for his remarks on Chief Minister Mamata Banerjee. CPIM leader Shamik Lahiri has complained to Election Commission regarding violation of MCC against Trinamool Congress General Secretary Abhishek Banerjee about his announcement in radio of giving Awaz Yojana money directly into beneficiaries' bank account within 6 months. Right. Kullan, just hold on. Our analyst, Mr. Prafulla Ketkar, would like to ask you a question. Colin, there are two issues that has dominated the discussion about West Bengal at the national level. One was, of course, Sandesh Khali. The other was CAA. You mentioned about Darjeeling and the entire region. Matua community plays a very important role when it comes to the outcome of elections there. How far these issues are making an impact on the ground when it comes to West Bengal, at least the first phase of election, because West Bengal is one of the states which will go for polls in all the 7 phases of election. So in the first phase, how do you see Sandesh Khali of course will come in the later phase, but in these two issues? Look, Sandesh Khali and CA issues are there. BJP and other political parties are campaigning regarding this, and Trinamool Congress is campaigning and of this like CAs will affect the general public, and BJP is saying that it is for only the migrants who will come from Bangladesh, Pakistan, and Right. Thank you, Kalyan, for joining us. And from Kolkata, we go to the salubrious Kashmir. And our RNU correspondent, Sunil Kaul, is with us. Sunilji, can you tell us about the preparedness that is going on in the Union Territory for the forthcoming Lok Sabha polls? The civil administration and the election machinery both are busy in finalizing all the required arrangements, particularly that of imparting training to the election personnel, including booth level and sectoral officers. In addition, for voters' education to acquaint them with the basics and importance of their franchise, the sweep programs are conducted on daily basis in every nook and corner of the Union Territory. The Chief Electoral Officer, Mr. P.K. Pole, is visiting different districts every day to oversee the preparations for the smooth conduct of the elections. Only yesterday he visited border district Rajouri to oversee the preparations being put in place for the upcoming elections.
On the other hand, political parties are fielding their candidates for different constituencies. As there are 12 candidates in free for Udhampur Kuthwa parliamentary constituency, 13 candidates have so far submitted their nomination papers for the Jammu seat. Meanwhile, National Conference has decided to field famous Gujar leader Mia Muhammad Altaf for Anantnag Rajouri parliamentary constituency in phase 3. Whereas Democratic Progressive Azad Party has announced to field Ghulam Nabi Azad for this seat. जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। केतकर जी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और देश दुनिया की भी निगाहें हैं। इस बार परिसीमन भी हुआ है सीटों का और कई सीटों पर समीकरण भी बदले हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें अनंतनाग सीट पर, तो पहले कश्मीरियों का वर्चस्व था। अब राजौरी अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में राजौरी पुंछ के 7 विधानसभा हलकों के करीब 7.5 लाख वोटर भी जुड़ गए हैं और इनमें गुज्जर और बकरवाल समुदाय और पहाड़ी समुदाय के भी लोग हैं। क्या समीकरण आप देख रहे हैं अब जब इस अनंतनाग सीट की अगर हम बात करें तो? देखिए, ये अनंतनाग सीट इंटरेस्टिंग इस कारण से भी हो गई है, अभी जैसे बताया आपके करस्पॉन्डेंट ने कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी से पहली बार लोकसभा में इस बार एंट्री करने का, पहले तो विधानसभा के लिए तैयारी करेंगे ऐसा लग रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे सब्सटेंशियल एसटी वोटिंग है। 370 के बाद जिनको पहली बार ऐसा होगा कि एसटी के रिजर्वेशन का लाभ मिला है, ऐसे वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मायने रखते हैं। गुज्जर भी है, बकरवाल है, कुछ हिल एरियाज के भी रिजर्वेशन के इसमें प्रावधान है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर में 370 का इम्पैक्ट जो दिखेगा उस दृष्टि से राजौरी और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बनी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक जमाने में ये कॉन्स्टिट्यूंसी पीडीपी का गढ़ हुआ करती थी, इस बार वो गढ़ भेदा जाएगा क्या, ये देखने की बात होगी। आतंकवाद पर लगाम के बाद इस बार हम उम्मीद करें कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और लोग बाग खुल के और बाहर आकर के निडर होकर के वोट देंगे। देखिए, ऐसा है कि पिछले खास करके जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट के, खास करके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से सारी धमकियों के बाद भी 70% से ऊपर मतदान गया है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा के इसमें भी दूसरा 65,000 फैमिलीज अभी इस बार जम्मू कश्मीर में ऐसी है जो पहली बार जिनको विधानसभा की एलिजिबिलिटी मिली है 370 हटने के कारण, तो वो भी शायद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, वो फैमिलीज है। Right. तो ऐसे में मुझे लगता है कि मत प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए। Definitely on that very encouraging note, Prafulla Ketkar ji, thank you for joining us in the studios and for enlightening our listeners with your valuable inputs. ये कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com. We conclude this program. We will be back tomorrow at the same time. Namaskar.